सर आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये वीडियो अमेरिका पर आधारित है और यहाँ पर एक चैनल है वोल्टर्स वर्ल्ड करके। अच्छा जी। यहाँ पर एक बंदा हमें ये बता रहा है कि अगर आप अमेरिका आते हैं तो आपको वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। सर एक हिसाब से ये बंदा बाकी में बहुत अच्छी जानकारी दे दिया है क्या वहाँ का क्या कानून है, वहाँ का क्या नियम है, उससे अगर आगा हो जाए तो कभी भविष्य में जानने को कभी मौका अपने को ऐसा मिले तो मतलब धोखा नहीं खा। सही बात है, बहुत अच्छी दे दिया वो। क्योंकि जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नया इंसान जाएगा, उसको पता नहीं, उठ पटांग हरकत कर दे तो जरा से वो बन हो जाए। इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि वहाँ के तौर तरीके क्या है, रहन सहन क्या है, ये बहुत जरूरी है उसके लिए। यार मैं सर भाई वैसे क्या है कि मैं 2-4 देश घूम कर आया हो गया। हाँ। अब होता कि क्या कि जो चीज अपने कुछ सही बात है। वो है तो बाकी में ये वो जो जानकारी देती ये पता चला वो गलती नहीं हुई तो सही चलेगा, सही आ गया। अब यहाँ का क्या है कि क्या नहीं है, अब वो पहले से जानकारी दे दिया है वो कभी भविष्य में लगवा नहीं था, कभी मौका लगा। सही गलती तो नहीं होगी ना। सही बात। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, लगाइए देखते हैं। Hey there, fellow travelers. Mark here with Wolters World, and today we're in Mystic, Connecticut, at a beautiful place here in the U.S. And today what we have for you are the don'ts of visiting the U.S. because anywhere you go in the world, there's things you should do, but there's also things you shouldn't do. बहुत अच्छी बात करेगा, बिल्कुल आपकी ये बात में मैं सहमत हूँ। आपने जो बोली बहुत अच्छी बात बोली। And this video is going to just cover the U.S. in general, okay? And our first don't for when you visit the U.S. is don't touch the Americans. बाबू भाई तुम अक्सर क्या देखा जाता है कि बहुत गुस्से हो तुम। वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे टच मत करना, दूरी बनाए रखना, ऐसा बता रहा हूँ। Look, Americans really like their personal space. It's like they have a bubble around them, and if you get too close to them, they feel very, 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 very uncomfortable. सही बात है भैया, जैसा अपार्टमेंट में तो क्या दूर से ऐसे बोलते हैं। और क्या। Okay, so make sure you give them a little distance when you are there, you know, because I know when I go to Italy and Spain and stuff, we're like, Mark, how's it going? All this stuff. And my American friends sometimes go, wow, they're really, really affectionate. Like, that's just how it is. Here, space is key. ये गार्ड वाल लो अपने के अंदर, क्या अपने दिमागी तौर के ऊपर भी। वहाँ जाना है तो दूरी बनाए रखना, ज्यादा अंदर घुसना नहीं कहीं भी, बस। The second don't I have for you is don't count on public transportation. Look, when we were in China and we were throughout Europe and South America, we took buses and trains and planes and all kinds of stuff to get all over the place because public transport is really developed. Here in the U.S., you cannot count on public transport. यार ये बहुत बड़ी है यानी कि इतना बड़ा देश होने के बाद वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मजबूत नहीं है यार। अपने भारत का ट्रांसपोर्ट क्या है, भारत के शुरू से लेके एंड तक, कोने तक आप कहीं भी जा सकते हो, इतना मजबूत है अपना ट्रांसपोर्ट। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। मैंने क्या सैलड गए वहाँ भी मैंने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको हर जगह मिलेगा पूरा आसानी से। To get you a lot of places. Yes, in big cities like New York and Chicago and stuff like that, you can get around with public transport and it'll take you where you want to go. But a lot of towns, small towns especially, in middle-sized cities, the public transportation networks are not very good. कुल मिला के ये हुआ कि बड़े शहरों में दिक्कत नहीं है, कि छोटे शहरों में गए आप तो दिक्कत है, सामने उठाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। And at night, sometimes it's not very safe. So that is kind of a frustrating thing. So yes, you're going to probably have to rent a car when you come here, okay? भैया अगर कार हमने किराए से ली तो भैया वो तो हमने कहा हम तो नंगे हो जाएगी, हम तो गरीब गरीब से काम करेंगे भैया। So just have a heads up for that. And that kind of leads into the next don't I have for you is that is don't underestimate the size of the US. बाप रे। हाँ वैसे मैंने सुना तो है कि अमेरिका बहुत ज्यादा बड़ा है। कोई लोग ये मान लेते हैं कि अमेरिका तो छोटा है और वो मजे को बच जाते हैं। हाँ। The United States, it's, you know, continental U.S. is like continental Europe. It's huge. I mean, would you think of driving from, oh, I'm going to do, you know, from Lisbon to Paris and then go up to Tallinn and then head down to Sofia? No, you're like, that is insanely far. याद मेरे भाई, यूरोप यूरोप से भी बहुत बड़ा है अमेरिका भाई। वाकई में।
It's the same thing when you come to the US. I meet a lot of travelers that are like, oh, I'm going to fly into New York, grab a car, drive down to Miami to see Miami Beach, and head over to LA. I'm like, dude, you got 2 weeks? You're going to spend the entire time in cars. The distances here are insane. So what I recommend is picking a region. So, oh, we're going to stay here in New England and see New England. Or we're going to go in the Southeast, go to Atlanta and Savannah and Charleston, things like that, or visit the West Coast. You do that. सर जो बता रहा सही कह रहे हैं वीडियो में कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, वहाँ पे घूमना है तो तुम सोचो कि एक ही बार में पूरा अमेरिका घूम लूं तो मुश्किल है। एक एक करके एक एक हिस्सा घूमोगे जब भी फायदा बनेगा, नहीं तो क्या बाबू भाई तुम्हारा टाइम पूरा कार में चलेगा 10 बजे जाने में, कुछ नहीं कर पाओगे। To get a better idea of the culture there and things like that, but also it's just the logistics things because it's so far between the places. And to go along with that, for Americans, a 3 to 4 hour drive, that's a day trip. Like my parents live 3 hours away. I will literally get up, go drive, have lunch with my mom, and then drive back home just for lunch. 6 hours in the car. खाली लंच करने के लिए 6 घंटे का सफर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। No big deal. It's about 7 hours when we start to think, that kind of is a long drive. And we drive the entire way through. Okay, this isn't like, oh, I must stop every 2 hours and have a 15-minute break. Oh, no. No. We drive all the way through, okay? Now, my next note for you when you come here is, don't think that the sticker price is the end price. भैया देखो जो MRP लिखी रहती है इसको फाइनल प्राइस में समझना यार, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा ये तो फिर यार। धोखा भी सकता है यार, फिर फाइनल प्राइस क्या है चलो देखते हैं। Look, in the US we have sales tax. I know other countries they have VAT, value added taxes. They're already put into the price of products. So when you see, oh, it's $1 or €1, oh, I only pay €1. In the US it is not like that. We have sales tax. So a certain percentage is added onto that product. And the thing is, I cannot tell you what the sales tax will be where you're going to travel because it's different everywhere. यार भैया ये जो वो तो ताजुब की बात है। अब जैसे अपन ना टूथपेस्ट खरीदा लाल टूथपेस्ट खरीदा, अब वो 100 रुपये का रेट अंदर निकलेगा तो 100 रुपये का अलग हो जाएगा। अब ये तो वो 100 रुपये नहीं निकालेगा, 100 रुपये टैक्स अलग है। और फिर एक बात और हर राज्य का अलग अलग ये तो दिक्कत वाला काम बहुत है, बहुत दिक्कत वाला काम है। मुसीबत हो जाए तो Cities, states, counties, different products have different sales taxes. And some products don't have sales taxes. Some cities don't have sales taxes. Some have 10% sales tax. It can be different anywhere you go. So if you're going to go get your dollar menu item at a McDonald's or a Culver's or a wherever, it's not going to be $1. Where I live, there's 2 cities right by where I live. One, it's going to be $1.08. The other one, it's going to be $1.09. So be ready for that. And it's not just the sales tax. Also, there could be the tipping on top. And that leads us into... हाँ बताओ। The 5th don't, and that is don't forget to tip. Look, in the US, you tip 15 to 20% at a sit-down restaurant, okay? Now, McDonald's, stuff like that, no, you don't tip at a fast food place, but it's a sit-down restaurant where they bring you your food and stuff like that, you will tip them 15 to 20%. If you are in a group of 6 people or more, sometimes they automatically put the gratuity on there, which sometimes can be 18% or something like that. ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है यार, का हमारी मर्जी नहीं देना हमारे को, हमारे हमारे को सर्विस अच्छी लगी तो हम भाई को देंगे। बाबू थोड़े ना बहुत 15-20% किसे कहते हैं यार, बताओ। बहुत बड़ी बात है। हाँ यार, बात है यार, ये तो बड़ी कमाल की बात है। बिल बना अपना 1000 रुपए का, उसका 20% अगर अपन जोड़े तो कितने बनते हैं? 200 रुपए। मतलब 1000 का सामान लिया तो देना अपने को 1200 रुपए, तो दिक्कत है कि नहीं यार? Look, when you come to the US, there's a reason why the food is like so affordable. You're like, wow, it's cheap to go out and eat in the US. It's because there's kind of this understanding that the service fees and paying for the workers and the waitresses and stuff like that, that goes on to you, the person eating there, with the tips. So the food and stuff can be cheaper when you go out to eat. And I know a lot of people say, I don't believe in tipping and this tipping isn't the right thing. They should pay their people more. वो तो साले एक तरीके देखा जाए बाबू भाई, तो साला सारे ग्राहक के ऊपर तो बोझ डाला पूरे का पूरा। हाँ यार, तू दुकान से लेकर बैठा कोई एक बात कर, अब तेरी कीमत भी हमको देना,
उसको जब भी हम तो फ्री है बिल्कुल यार, और जो करना है वो हमें दिक्कत का काम हो रहा है। बहुत दिक्कत है यार। Well, if you want to pay more for your food, they can do that, but they don't. Okay, so tipping is something we do here in the U.S. So do tip that 15 to 20%. Oh, also, if you're at a bar and you're buying drinks, you're gonna want to tip a couple dollars here and there. Otherwise, the bartender might not be too quick to come back and get you your next drink. So following off of those tips, what you need to realize is our next don't is don't be freaked out by the over-the-top service and free stuff you sometimes get in the U.S. ये बहुत अच्छी दिख रही है, बताओ बहुत अच्छी दिख रही है। Look, because of tipping and commissions and stuff like that, yes, there is a lot of over-the-top service here. But the thing is, in the U.S., the people actually are pretty nice and they want to help people. And sometimes for some travelers, if they come from countries where people don't get a lot of service sometimes, it can be a bit much, so don't freak out about it. Also with that is don't be freaked out with some of the free stuff you get when you go to restaurants. Look, if you go to a restaurant and they bring you bread and water or chips and salsa and all those really good things, that's included in your meal. Okay, so if you're going to be buying something, they're going to give you some free stuff. It might be some bread, it might be a salad, it might be a water, it might be something like that. So don't be like shocked when like, wait, I didn't order this bread. वो एक ये मामला चला गया इनका, अचानक से कोई फ्री चीजें देता अपने को, उसमें वो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ टिप का भी मामला, एक तरफ ये भी मामला है। ये मामला अच्छा लगा मेरे को तो यार। अच्छा तो लगा, लेकिन वहाँ पे अपने को सावधानी बरतना। सावधानी तो ठीक है, वो यही सही। अचानक से आपको फ्री चीज मिल जाए तो क्या करोगे? मैं इसका है फ्री का माल तो बुरा किसको लगता है? I didn't order this salad. Oh no, that comes with your meal, okay? Now the thing is though, you can't just go in and get chips and salsa and walk out, all right? You actually have to order some food when you go there. Now my next don't for you is don't smoke cigarettes in the US. अबे यार भला सिगरेट नहीं पी सकते, यही क्या मेरा भैया है? हाँ यार, ये कौन सा मामला लगा यार? सिगरेट नहीं पी सकते बोले? बताओ आप। इतने फिल्में देखते हो हॉलीवुड की, हर आदमी मेरे को सिगरेट पीते हैं। बताओ। If you're smoking cigarettes in the US, people will look at you like you're trying to kill their baby. Cigarettes is like totally verboten, like people really frown upon it, which is funny because when they talk about marijuana and stuff like that, people don't seem to care as much, but cigarettes, oh, you're trying to kill my baby with that cigarette 2 blocks away. So if you do smoke, make sure you try to find a place where you can smoke, because a lot of restaurants, or pretty much all restaurants, hotels, stuff like that have smoke free. It's smoke free. So you have to go like 15 to 20 feet away from doing things. अच्छा, तो मतलब सिगरेट पी तो सकते हो आप? हाँ। पीने के लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन जगह देख के जैसे पब्लिक से भरी हुई, वहाँ आपको सिगरेट नहीं पीना। अच्छा। अगर पीना है तो पहले कोई जगह देखो पब्लिक हो, आगे तो पी के जाओ। यही बात मेरा सैलरी में देखी थी। वाह। So that can be something. So I've come here outside my favorite liquor store to give you the next don't. And that is, don't try to buy alcohol unless you're 21 or cigarettes unless you're 18 or over in the US. बाबू ये अच्छी बात लगी इनकी, 18 साल में आप सिगरेट पी सकते हो, 21 साल में आप दारू पी सकते हो। ये इसे एक बार ये देखने अगर वो जाता होगा तो उसको दुकान में इंतजार शक हुआ तो जाहिर सी बात है। They will not sell them to you. And the thing is, don't forget your ID, because if you look like you're 40 or under, they may ask you for that. And don't get mad at them, because if they don't ask, they could get in trouble and get fined. So don't be surprised, because we've had friends that have come here, tried to buy alcohol, and they're like, sorry, you don't look old enough. Oh, I don't have my ID. Too bad. And the thing is, it's not just the person buying. They might ask anybody with you, so make sure everybody has their ID. ये बात अच्छी बात है कि ना आईडी कंपल्सरी का आईडी तो मांगते हैं। अगर आपके साथ 18 साल कोई चलेगा उससे ला ले भैया, चला गया आईडी ला, उनकी भी जवाबदारी है नहीं भैया। If they want to buy liquor, or they want to buy alcohol, or if they want to buy cigarettes. So just FYI on that one. Oh, that's also another don't I have for you is don't bother with a metric system when you come here. We don't use meters, we don't use kilometers, we don't use liters. अब क्या है, जैसे ये बात एक अलग चीज है। अब जैसे अपन किलोमीटर में लगते हैं, मील में लगते हैं, तो हर जगह का अलग-अलग मामला। अपन खाली कंफ्यूज हो सकते हैं। It is inches, feet, miles, gallons, pounds, things like that. And I'll put a conversion chart here to show you. But honestly, you may say, hey, how far is it to this next town? And they'll tell you, oh, it's like 60 miles. You're like, what's that? अपने माइंड में से एक भी भाषा नहीं चलती है।
just know 60 miles, it's about 100 kilometers, okay? So just do that because the people here won't get it. I mean, I have people, when I'll tell them, oh, it's 100 meters away, they're like, 100 meters? It's like 100 yards. Oh, okay. So make sure you do know your imperial system, okay? Because metric, we don't do that so much here. So our next don't is when you do come to the US, there's a couple things you don't talk about, okay? One is gun control, and two is politics, because no matter where you are, you will get people on either side of the spectrum, and they will have an argument with you. So it's best just to lay off those topics, talk about the weather. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये नियम तो हर देश में लागू होता है भैया। दूसरे देश में जाओ तो हमारे की हैरानी थी और ये बंदूक जैसी बातों से करने को फायदा क्या है यार? भाई घूमने आयो अपना मजे करो घूमो फिरो और आ जाओ। ये राजनीति जन्म ये दो चीज ऐसी है कि अगर इस पे आपने बिजनेस कर ली आप यकीन मानोगे इसका कोई पार ही नहीं है। Oh, wouldn't it be nicer if it was sunny today and we could go sailing? Yes, that would be much better than discussing gun control or politics. Just putting that one out there for you right now. Now, my next note for you is don't assume that all the U.S. and all the Americans are the same. Because I know a lot of people say, oh, you're a typical American. Well, it's like saying you're a typical European. Look, the U.S. has all kinds of different cultures, all kinds of different people, all kinds of different topography. यार ये बात तो सही है एक अमेरिका जो बना है वहाँ का भी हम मानकर चलो दुनिया का हर देश का हर जगह का आदमी वहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। And scenery and stuff like that. And when you come here, don't assume it's all the same. You will see regional differences in cuisines and how people treat each other and how everything looks, all kinds of stuff. So don't just think there's just one kind of American. ये चीज तो हमारा वहाँ भी लागू होती है सर, क्योंकि हमारा हर 60 किलोमीटर भाषा बदल जाती है। हाँ, सिर्फ भाषा ही नहीं मेरे भाई, यहाँ तक आप समझते कपड़े तो कपड़े खाने तक बदल जाता है यार। They're all fat, slobby guys with ponytails. No, there's actually a lot of skinny people in America too, not just fat guys like me and my buddy Jeff. They're all those. So don't assume it's all the same, all right? So do go out and explore. And that's why I always say is if you're going to come to the U.S., go and explore different regions because you'll get a really different feel. Because going to the southeast and seeing the plantation homes and going to see the southern towns down there versus going to the northwest and Seattle and Portland or going to San Francisco or going to the Midwest with Chicago and Milwaukee, you're going to have a very different feel. सर ये तो हमारा वहाँ भी है कि साउथ इंडिया में जाओगे तो ऐसा लगेगा अलग देश में आ गया मैं। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो ऐसा लगेगा दूसरे देश में आ गया। कलकत्ता जाओगे तो वहाँ पे लगेगा दूसरे देश में आ गया। वो भैया क्या है अपना जो हिमाचल प्रदेश अगर मैं वहाँ पहुँचाऊँ तो ये मान कर चलो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्विट्जरलैंड में आ गया। Which is really a cool thing to do, and you start to understand is, wow, the U.S. does have a lot of different cultures within it, a lot of different feelings when you go around here. And following on with that, I guess I would say another don't assume there's no culture in the U.S. because there are a lot of cultural centers out there. संस्कृति तो हर जगह, ये तो कोई बेवकूफी होगा जो ये सोचेगा अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं है। If you go down to New Orleans, you see a very rich culture there. You go to New York or Boston, here in New England, you have a very distinct culture. In the Midwest with Chicago, Milwaukee, you go to the West Coast. I mean, there's a lot of different culture here. Historic culture with the Native Americans or more recent culture here. I mean, you have all that here you can really take in. And saying there's no culture in the U.S., it's not really true because there are all these different cultural centers with great museums like the Art Institute of Chicago or the Met in New York, the Getty in LA. There's all kinds of stuff you can see and do when you are here. For a cultural trip, it's not just seeing beautiful landscapes and seascapes like we are here in Connecticut. There's a lot more to it than that. जैसे जब तक मेरा मानना ये है कि अमेरिका में कुछ जाते कल्चर वैसे होंगे, वजह क्या है कि वो जगह ऐसी है कि दुनिया का कोने कोने में कहीं ना कल्चर कोने आदमी वहाँ आके बसा है तो वो तो हर जगह कल्चर अलग ही मिलता है। जाहिर सी बात है बिल्कुल। Now, my next don't for you is one that I kind of get a lot of questions about. We actually have a video on this, and then that is, don't think that how are you or how's it going is actually a question. Look, when we say how's it going, how are you, these kind of things in the U.S., it's not a question, it's a statement. It's like saying hi. Okay, just take it as a hi. Because a lot of people say this. Everyone asks me how I'm doing. When I try to tell them how I'm feeling, they're like, well, I was just saying, how are you? यार अजीब बात है। अब वो देखो अब वो पूछेगा आप क्या करेगा, चलो सलाम
अरे वो अच्छी बात है यार. Here, how are you is just hi. Think of it that way. It's like in France. Ça va? Ça va? How's it going? How's it going? We're good to go. In Portuguese, tudo bem? Everything good? You answer back, tudo bem? Everything good. It's just, how are you? How are you? You move on, okay? So वाह यार, सारी नई चीज पता चली मेरे को आज यार, वाकई में यार. don't think it's an actual question, all right? Now, another don't I have for you is don't expect a lot at the fancy hotels. You know, you're thinking, oh, I'm going to pay more money for this hotel. I'm probably going to get nicer stuff, like a nicer breakfast, better Wi-Fi. Oh, no, 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 no. ये बड़ी हैरानी की बात है, ताज्जुब की बात है कि लग्जरी होटल में जाओ और उनसे कुछ उम्मीद मत लगा फैसिलिटी की यार. ये कौन सी मामला लगा? अरे भाई पैसे दे रहे हैं तो फिर सुविधा मिलना चाहिए ना उसकी यार. अरे उम्मीद क्यों नहीं लगा, पैसे दे रहे हैं भाई. तो वही तो उनका कहना है बढ़िया वो भी कि हर चीज के पैसा उसके अलावा भी अलग से अलग देना आपको. अरे यार ये तो गलत बात है. दिक्कत वाले काम है क्या एक तरीके देखा जाए तो. For some reason in the US, it seems like the nicer the hotel, the more you have to pay for the things you think would be free, like Wi-Fi and breakfast. अब ये कौन सी बात है, वाईफाई चलेगी थी उसके भी पैसे हम देना पड़ा. So don't feel like you have to stay at the fancy hotels, because honestly, if you're going to be going out and exploring, you just need a couple beds, right? So stay at the hotels in the US, and the cheaper ones will give you free Wi-Fi, free breakfast, all these kind of things, which is really nice, so don't... यार ये तो चाहिए सब कुछ फ्री. फ्री चाहिए कुछ भैया. Expect that from the fancy hotels. Another don't I have for you is don't skip out on the local food. Look, we're here in New England. We're here in Connecticut. We've been having lobster and clams and oh my God, New England clam chowder. Oh, my tummy is just like more. It's fantastic. When I'm in the South, man, Southern fried chicken, mac and cheese, barbecue. Oh my God. The food in the different regions in the U.S. are great. So don't just go to chain restaurants. When you go to your hotel, ask them, hey, what's some local restaurants around here? What's some locally owned and operated restaurants so you can go there and check out those places? क्या साहब आपका कहना बिल्कुल सही है. और मैं ऐसे ही करता हूँ, जिस देश में जाता हूँ उसी देश का खाना खाता हूँ. अब वो हमारा एक दूसरा लाइन वो जाएगा कहीं भी ढूंढने खाना मिल जाएगा. अरे भाई मैं तो ये कहना है आप जिस जगह गए हो और जिस देश में गए तो वहाँ का खाना खाओ तो आपको पता चलेगा हमने कुछ खाया. Because they really give you a great experience, and I find a lot of times those ones actually have better service than the chain restaurants because it's a mom and pop place where the owner is the ones helping you out, and that is really kind of a cool thing. ये सही बात है कि लोकल जो रेस्टोरेंट रहते हैं नहीं खाना भी अच्छा पकाते हो सस्ता भी रहता है मजा आता है खाने. Now my next don't for you is don't get sick. Look, healthcare in the U.S. यार ये आपका जो कहना है कि बीमार मत आप ये बीमारी इंसान के हाथ में छोड़ी यार. इंसान तो कभी भी बीमार हो सकता है. Is insanely expensive, and just because you come from another country doesn't mean they're not going to find you for the bill. All right, so if you're going to be coming here, make sure you get travel insurance or trip insurance, so in case you do get sick or you do break an ankle or you do break an arm or something happens to you, your insurance will cover it. Now you might have to pay it first, and your insurance pays you back, but at least you'll get something back. असल वजह है कि सर बता रहे हैं कि महंगाई वाला बहुत है, बीमार होता तो भारी बच्चा अपनी तो. अरे मेरे भाई जो बीमार हो जाते भाई एक फायदा अपना ये भी मुंबई भाई जाओ भी यहाँ कहते कि हमारे पैसे ही नहीं पैसे खा. हाँ यार. Because healthcare here in the U.S. is insanely expensive, okay? So make sure you're prepared for that. And I guess my last don't I'm going to have for you is one that people actually got mad at me for when I lived in other countries when I told them the U.S. has 50 states. And they said, no, the U.S. has 52 states. Look, don't think the U.S. has 52 states. The U.S. has 50 states, okay? Just a heads up on that one. I'm sure that people are going to be commenting down below that when I was in school, they told me 52. No, there's 48 on the mainland, and then Alaska and Hawaii are 49 and 50, all right? So those are our don'ts for visiting the U.S. What are some of the don'ts you have for the U.S.? Because I know there's more out there. I just want to get some of these out there to help out travelers heading to the U.S. just so we can get things going. Anyway, if you like videos like this, we have stuff on what the don'ts of going to Russia, the don'ts of going to Germany, the don'ts of going to Brazil and things like that. And we really like helping travelers with honest travel advice. So if you like this video, do click that subscribe button. It means a lot to us, and we put new travel videos out every Wednesday and Saturday to help great travelers just like you. So I'll say bye from Connecticut and have a great time in the U.S. because don't worry, you will. It's a fantastic place. वो जो उन्होंने बीमारी का जो बताया नहीं तो
इसीलिए मैं बताया आप यहाँ आओ तो बीमा करा के आओ। हाँ और सही है। क्या कि मैं जो जहाँ भी गया हूँ जिस जगह गया हूँ ना हाँ तो मैं अपना बीमा करा के गया हूँ। सही क्योंकि बात। क्या है कि देख मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे साथ कहीं कोई भी घटना जाहिर सी हो बात सकती हो कहीं सकती है। बीमार पड़ सकता हूँ, तो मैं गया हूँ ना बीमा करा के गया हूँ। सर ने वाकई में टॉपिक बहुत शानदार सुना कि अमेरिका जाना है तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हाँ। कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है, किस हिसाब से रहना है। ये सही साइड वाला वीडियो बनी उन्होंने, और जानकारी वो शानदार लगी मेरे को उसकी। बहुत अच्छा मुद्दा चुना उन्होंने वीडियो के लिए। यानी उन्होंने एक एक चीज को ये मतलब उन्होंने क्या आपको ध्यान नहीं देना, आपको जब बेबर से को सिगरेट नहीं पीना, सही। आपको कोई ऐसी जगह पे वो काम नहीं को करना जिससे आपको दिक्कत है। बाकी में ये जानकारी जो उधर थी ना, आज तक अगर समझता हो नहीं तो पूरे साल में वो होशियारी अगर जाएगा तो मैं समझता हूँ वहाँ कभी धोखा नहीं खाएगा। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सही साइड बताई है कि हमारे अमेरिका को छोटा समझने की गलती मत करना, बहुत बड़ा है। हाँ। वो एक दिन में तो घुमा जाएगा ही नहीं, है नहीं? नहीं। तो वही चीज़ हमारे इंडिया पे भी लागू होती है, क्योंकि हाँ। इंडिया को छोटा समझने की कुछ गलती मत करना। एक हफ्ते में नहीं घूम पाओगे, कम से कम 1 महीना लगेगा तसल्ली से घूम पाओगे तो। जैसे सब कल्चर उन्होंने हर राज्य का अलग अलग बताया। आप ये मान के चलो कि ये कि ये हमारे यहाँ भी लागू का, हाँ हमारे भी हर राज्य का कल्चर अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। यहाँ तक कि तीनों मौसम आपको एक साथ मिलेंगे, कहीं गर्मी मिलेगी तो कहीं सर्दी में मिलेगी, और एक पूंजी करके वहाँ आपको बरसात में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है ये हमारे में लागू होता है। कुल मिला के ये वो जानकारी है कि कोई अमेरिका घूमने जा रहा हैगा, हाँ। तो उसके लिए जानकारी सोना है मेरे हाँ, लिए। बिल्कुल सोने के लिए लगभग है उसके लिए। वो घूमने जाए या कोई काम काज से जाए या और किसी देश काहे में से भी जाए, जाए वो। हाँ लेकिन जानकारी अगर उसके पास है तो ये लेकिन वो कहीं धोखा नहीं दिखाएगा, ना कोई मुसीबत में आएगा वो सब। बाकी में वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसी तरह की वीडियो जानकारी के साथ दोबारा फिर आप ही लेके आएंगे और दोबारा आप ही सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।